Good evening, boys and girls. So, how are you guys? Am I visible, guys? Good Is evening, sir. I'm fine and is my yes, audio video clear? yes, sir. Yes, sir, you are visible. Yes. Okay. So during first 1.5 hour, please do not ask any questions. Send your queries on the mail, on the BOS mail, the link which has been provided to you. Okay. So later on, we will take your queries. Okay, sir. So, welcome to all of you once again, students. And today we are going to start a new subject, that is auditing and ethics. So, I hope that you have heard the name auditor. Yes, you can drop your mails. You can write on your BOS mails. Have you heard the meaning of? Have you heard the name of? Have you heard the word audit or auditor anywhere? Yes, Yes, sir. anyone? Yes, sir. Audit means ऑडिट किसी बुक या किसी चीज की इंफॉर्मेशन एग्जामिन करने को ऑडिट करते हैं और ऑडिटर जो होता है जो उसे एग्जामिन करता है एनी इंडिविजुअल एनी पार्टनर्स हो गए Yes, Rashmi, please do not speak right now. As I have told you, जैसे कि मैंने आपको बताया है, आप मेल डालिए, बाद में हम बात करेंगे. आप इसको लिख के मेल डालिए. जो बीओएस का मेल है आपको दी हुई, आप उस पर मेल डालिए. ओके, बाद में हम बात करेंगे. सर एक इज इट? मिनट सर किस कहाँ पे मेल डालना है ये बीओएस ऐप पे है. अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो फिर वो बाद में आप बोर्ड ऑफ स्टडी से पूछिएगा. अभी आप बीच में ओके पहले आप बात सुनिए, सारी समझिए, उसके बाद हम लास्ट के आधे घंटे में बात करेंगे. ओके ओके. सो यस, रवि राज, यू आर राइटिंग yes on financial reports. Soumya, you are stating verification and examination of accounts. Yes, anybody else who can give the message on mail? Yes, anybody else? Students, have you heard the name audit, auditor? If you have heard it, if you have understood it, then please drop a mail. Please drop a mail on the mail of BOS, which is available through your app. Yes, anyone else? Yes, Aishwarya, Pinky Kumari. Yes, Krish is writing audit is an independent examination of financial information. Yes, that is the textbook definition, Krish. You are right. Anybody else? And guys, tell me, what is this word ethics? Yes, good evening, Mohammed. Yes, tell me, what is the meaning of ethics? Drop the mail. Do not interact right now. We will interact in last half an hour. Please do not interact right now. Drop the mail. What is the meaning of ethics? Yes. Yes, Rashmi, now your mail has come. Audit is examination of financial statements. Yes.
Yes, Krish, what is the meaning of ethics? Yes, can you tell guys what is the meaning of ethics? Yes, Aniket Jain, you are right. Moral principles governing individual behavior. So, see, students, we whatever we do in our lives, so we generally tend to follow ethics. We tend to follow societal norms. So, ethics means moral principles governing one's behavior to do things which are which are morally correct, which are morally right, like not to act in a dishonest manner, to maintain integrity. So these all things fall in the meaning of ethics. Yes, Aishwarya, you are right. You are stating ethics is a right way to do business. Yes, because if you follow unethical practices in your business, then ultimately these are going to boomerang on you. These are going to have an adverse effect on your business. And instead of growing the business, it would have an opposite effect. Okay. Yes, Ashok ji, please mute everyone on Zoom. Students are making noises. Please mute everyone on Zoom. So the name of the paper, students, is Auditing and Ethics. So first of all, we will talk generally what audit is all about and what ethics are all about, so that you can know, so that you can understand how to approach this paper, how to approach this subject. So students, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ऑडिट का ओवरऑल कैनवस क्या है, ऑडिट का स्कोप क्या है, तो आप तो आप इस सब्जेक्ट की बारीकियों को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम थोड़ा सा टाइम इसमें, आज आपका फर्स्ट लेक्चर है, हम इसमें थोड़ा सा टाइम डिवोट करेंगे कि ऑडिटिंग है क्या, आपका ऑडिटिंग का पेपर में क्या क्या इंक्लूड है, और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, पहले हम इस बात पे बात करेंगे। ओके। So students, all your queries, please, when do not raise your queries during the lecture. During the lecture, please send your queries on the mail given by BOS. So in the last half an hour, we will be interactive. Okay. So please. Yes, guys, now you are able to hear me now? Okay. So students, these are the, first of all, we shall see what is your syllabus. So these are the chapters in your syllabus. You are having two modules, module 1 and module 2. Okay. You are having, yes guys, you are able to hear me? Okay. So there are two modules.
The study material is hosted on your website, on ICAI website, BOS website also, and you must be having, you must have now got hard copies of modules also. So in module 1, we have got 4 chapters. Chapter 1 is nature, objective and scope of audit. So this chapter deals with what audit is all about, what is the meaning of audit, what is objective of an auditor, what things fall within the scope of an audit, what things do not fall in the scope of an audit, what are standards on auditing. So we will be discussing these terms. So this chapter deals with all these things. Next chapter is audit strategy, audit planning and audit program. Okay. So like how to plan an audit and how to strategize audit. What is the difference between audit strategy and audit planning? And there is third chapter, risk assessment and internal control. How an auditor assesses the risk in an audit. Then there is chapter 4 on audit evidence, and there is chapter 5 on audit of items of financial statements. So similarly, we have other chapters in the module, that is audit documentation, completion, and audit report, audit of banks, and chapter on ethics. So in total, there are 11 chapters. Remember, in total, there are 11 chapters. 5 chapters are in your module 1 and 6 chapters are in your module 2. Okay, is that clear? So before we start the chapter, students, I'll also brief you about the structure of your paper. About the structure of your paper. Since you are preparing, you are appearing for a professional examination, it is necessary that you know beforehand what should be the structure of your paper. Okay, so I am showing you the UA paper, mock test paper. So these paper, students, which you would be appearing in September 24 exams, it would be divided into 2 parts. One is division A and another is division B. So division A is case study based and MCQ based part. You would be given a separate OMR sheet on which you have to blacken the circles. Okay. So this part contains 3 case studies followed by MCQs, multiple choice questions, and there are some independent MCQs also. So weightage of this part is 30 marks. Okay. So weightage of this part is 30 marks and 70 marks paper is descriptive, where you have to write answers to the questions. So it contains 4 marks, 3 marks questions. So the weightage of question is either 4 marks or 3 marks. So it is not so that a question carries weightage of 10 marks or 20 marks. It is not so. You are tested on your ability to think, to analyze, to apply. Okay. So again, remember, students, that this paper would consist of a case study and MCQ based portion, which would be of 30 marks, and balance paper would be subjective type, a descriptive type, where you would have to write the answers. It would be of 70 marks. Is that clear to you guys? If it is clear to you, drop the mails. Drop the mails through your BOS app if it is clear to you guys. So far as your understanding of the paper is concerned, structure of paper is concerned.
Yes. So everybody is saying it is clear to them. Yes, Tanisha, Muhammad, Swati, everybody is saying that it is clear to them. Okay, that's fine. So yes, guys, we were discussing about the meaning of audit. Okay. So tell me, students, who prepares the financial statements of an organization, of an entity? Yes, drop the answer in your mails. Who is responsible for preparation of financial statements of an entity? Yes, management. So management is preparing the financial statements in accordance with applicable framework, and in accordance with laws, in accordance with regulations. So obviously, while preparing the financial statements, they must be following accounting standards. अभी आप अकाउंटेंसी की क्लास चल रही है ना आपकी, तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं. सो इस बात को एंश्योर कौन करेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हैं वो ठीक हैं, उसमें कोई गलतियां नहीं है, उसमें कोई एरर या फ्रॉड नहीं है? कौन एंश्योर करेगा इस बात को? कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वायलेट तो नहीं हो रहा? कौन कौन एंश्योर करेगा? उसके लिए देयर नीड्स टू बी सम इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म. देयर नीड्स टू बी somebody who can ensure that whatever management is prepared, it is in accordance with the financial reporting framework, and it is in accordance with the laws, and the necessary standards have been followed. Yes, auditor. Yes, Mohammed. Right. So auditor would ensure it. So therefore, students, you can understand how important the role of an auditor is. क्या आप सोच सकते हैं कि ऑडिटर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है? एक छोटी सी कंपनी से लेके एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी तक सबकी जो बैलेंस शीट्स है उसको उस पे रिपोर्टिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑडिटर की. सो ऑडिटर जो है स्टूडेंट्स, when an auditor reports on the financial statements, तो उससे वो what happens, how it is beneficial to users? When an auditor reports on financial statements, how it is beneficial to the users of financial statements? Yes, anyone? You can reply on your mails. You can reply on the mail, on the BOS mail. Yes. Yes, Krish. Krish, you are appearing for the first time, or have you seen the recorded lectures, or you are studying since quite some time? And what about Satya Gupta and Ravi Raj? Yes, tell me, Krish. Yes, all of you are writing correctly. So, when an auditor gives report,
he gives comfort. It is in the nature of assurance. आपको स्टूडेंट्स एश्योरेंस का मतलब पता है? एश्योरेंस मींस किसी को हिंदी में अगर मैं बोलूं तो तसल्ली देना. ओके, सो कंफर्ट देना, उसका एक कंफर्ट लेवल इंक्रीज करना. तो जब कोई भी आदमी, कोई भी यूजर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखता है, एक बैलेंस शीट देखता है जिसपे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन है, ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. सो इट इंक्रीजेस हिज कॉन्फिडेंस. So therefore, we say that audit provides comfort to users of financial statements. It enhances, it increases their degree of confidence. Okay. So Krish, you have read. That's very good. Great, Krish. So therefore, students, you can understand how much sanctity is attached with the signatures of a chartered accountant. So you can understand the enormity of sanctity attached to the signatures of a chartered accountant. So I will show you one thing, guys. So like this. See, guys, this is a auditor's report of a listed company, of India's largest listed company having largest market cap. So this is the report which the auditor gives, and below this there are signatures of the chartered accountants. There are signatures of auditors who have given this report, who have signed this report. Okay, so these things, all these things, what is auditor's report, what are contents of auditor's report, how an auditor gives opinion, all these things you will be learning as the time progresses in your module 2. Okay, so the purpose of showing you this report is that you come to know that what is the outcome of an audit process. So always remember, students, that outcome of an audit process is expression of opinion by the auditor in form of audit report. So the auditor finally expresses his opinion. So how does he express the opinion? He expresses the opinion through the medium of the audit report. So this is audit report which you are seeing on your screens. Okay. Clear, students? So आप लोगों ने रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं हमने देखे हैं, बहुत अच्छी बात है. सो स्टूडेंट्स, आप you already know that an audit provides reasonable assurance. An audit provides reasonable assurance. Remember reasonable assurance. And what is reasonable assurance? Reasonable assurance is not a low level of assurance. It is a high level of assurance. Remember, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. आपने दिमाग में इस चीज को बिठा लें कि रीजनेबल एश्योरेंस है वो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है. इट इज नॉट ए लो लेवल ऑफ एश्योरेंस. why it is a high level of assurance? Yes, Soumya, Krish, anyone who can tell me why assurance provided by an audit, why assurance provided by an auditor is a high level of assurance?
Yes. Yes. Can you tell anybody? Write on mail. Yes, Soumya, it is high level of assurance. But I am asking you why it is high level of assurance. Can you think? You have already seen the recorded lectures, 4 or 5 lectures you have seen. Just apply your own mind. Why it is a high level of assurance? डू नॉट हेजिटेट स्टूडेंट्स कि गलत हो जाएगा. कुछ नहीं, कोई बात नहीं है. गलत हो जाएगा तो आप कोशिश तो कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं है. Yes, Ravi Raj, you are saying absolute assurance is not possible. Yes, that's also true. Aniket, due to sampling and testing according to essays. Yes, Aniket, perfectly right. Yes, Satya, you are stating it is made my external auditor who conducts the process. Yes, students, you have to understand that, yes, Krish, you are also writing correctly, that what an auditor does, what an auditor performs, whatever procedures he is performing all these things in accordance with standards on auditing. ओके, सो जैसे कि अकाउंट्स बनाने के लिए क्या चाहिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. कंपनी कोई भी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है तो उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख के ही बनाती है ना. सो ऐसे ही ऑडिट करने के लिए ऑडिटर किसको फॉलो करता है? ऑडिटर फॉलो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. Auditor follows standards on auditing. So, since auditor is a professionally qualified person, he has devoted so much time, so much energies, and he has qualified a grueling exam. Like all of you are in the process of doing. So, therefore, and the work is performed in accordance with standards on auditing. So therefore, it gives a high level of assurance, which we in auditing language call as reasonable assurance. Which we in auditing language call as reasonable assurance. Clear, students? So, students, एक बात और है, जो आपका ये पूरा सिलेबस है ना ऑडिटिंग का, द होल ऑफ योर सिलेबस, जितने भी चैप्टर हैं इसमें, मोस्टली चैप्टर्स, एक दो को छोड़ के, वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे बेस्ड है. वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे बेस्ड है. तो जब भी आप एग्जाम की तैयारी करें, वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, सो यू हैव टू रिमेंबर the number and name description of the standard on auditing. So total students about 38 standards on auditing है. उसमें से आपके सिलेबस में about 28 या 29 है. Okay, 28 essays are there in your syllabus. So I have prepared this table. Okay, and I have also uploaded this table. I have prepared this table and I have uploaded this table on the portal. Okay, so on your BOS portal you can see there. So it would give you an overview. It would give you an overview of all the standards. उसमें एक कॉलम में स्टैंडर्ड का नंबर लिखा है, एक कॉलम में स्टैंडर्ड का डिस्क्रिप्शन लिखी है कि क्या उसका नाम क्या है, और लास्ट कॉलम में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी है कि वो स्टैंडर्ड किस बारे में है. उसमें आपको याद रखना
आसान रहेगा, ये मैंने टेबल अपलोड कर दी है। तो आप पूरे इस मॉड्यूल्स में, दोनों मॉड्यूल्स में कुछ चैप्टर्स को छोड़ के सारे चैप्टर्स आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे बेस्ड हैं। और ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपकी सिलेबस का क्रक्स है स्टूडेंट्स। दीज आर क्रक्स ऑफ योर सिलेबस। यस, मनन कुमार मिस्त्री, माय नेम इज आशीष बहल। यस, and you are asking Manan Kumar Mistry and Mohammad Abdan what are standards on auditing. So as I've been telling you, like we prepare financial statements in accordance with accounting standards. So similarly, an auditor performs his work in accordance with standards on auditing. So whenever an audit of financial statements is carried out, standards on auditing have to be followed. Standards on auditing have to be followed. Remember, guys, this is very important. Whenever an audit of financial statements is carried out and the auditor has to express the opinion in the form of audit report, he has to follow standards on auditing. He has to perform his work in accordance with standards on auditing. Okay. Now, is it clear to you, Manan Kumar Mistry and Muhammad? And now another question would be cropping up in your mind, students. What is the need of standards on auditing, which we call as essays in auditing? What is the need of standards on auditing? Yes, can you tell, guys? Anyone on mails? Yes, anybody on mail who can tell what is the need of standard on auditing? So students, I would again request you to see that you take this subject very seriously. It is one of the core subjects in CA course. So वो students remember है आपको LIC की टैगलाइन, क्या टैगलाइन है? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी. सो सिमिलरली ऑडिटिंग सीए करते हुए भी, सीए करने के बाद भी, because after qualifying as chartered accountants, most of you would be handling audit work. Most of you would become auditors. So therefore, students, you can understand the importance of this subject auditing and the standards on auditing. Yes, right. Ravi Raj, you are perfectly right. So essays bring uniformity. Yes. Aishwarya is also right. Chris is also right. Yes, in some way. So see, guys, when say there are number of auditors, so I am seeing the balance sheet and audit report of X company. I am seeing the balance sheet and audit report of Y company. So I know, a user knows that that this audit report, this balance sheet has been audited using same set of standards as in case of Y company. So therefore it promotes uniformity and it improves audit quality also. So audit quality क्या है? Yes, students, what is audit quality? Yes, Manan Kumar, you are writing this whole some copy paste type of thing.
Yes. What is audit quality? तो ऑडिट क्वालिटी का मतलब होता है कि जो काम ऑडिटर कर रहा है वो क्वालिटेटिव है। वो उसने जो भी ओपिनियन दिया अपने स्टैंडर्ड्स को, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को ध्यान में रख के उसको फॉलो करते हुए दिया। कोई उसने गलत ओपिनियन ही दे दिया। इंफॉर्मेशन जो, यस, कि जो वो इंफॉर्मेशन को ऑडिट कर रहा है, जो वो रिपोर्ट दे रहा है, उस पे रिलाई कर सकते हैं अगर क्वालिटी अच्छी है तो। अगर उसने स्टैंडर्ड्स को नहीं फॉलो किया तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो अपना ओपिनियन ठीक नहीं देगा। ओके। ओके। यस। यस, मनन कुमार मिस्त्री, यू आर ऑल्सो डूइंग सीपीए, और you what you are doing? Yes. So this table, students, I have uploaded. So it shows the names of all the essays and brief description of what they deal with. So there, here we have essay 200, which is there in your chapter 1. So your chapter 1 is largely based upon essay 200. Okay. So what does essay 200 deal with? It deals with independent auditors' overall responsibilities in conducting an audit of financial statement. So students, जब भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप स्टैंडर्ड का नाम याद रखिए और उसको एक दिमाग में ये याद रखिए कि ये स्टैंडर्ड किस चीज से डील करता है। तो ताकि अगर आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन भी है, ओके, तो आप इमीडिएटली उसको रिकॉल कर पाए, आप उसको देख पाए कि उसका ये किस चीज से डील करता है। तो उससे आपको क्लैरिटी एकदम आपके माइंड में आ जाएगी। अगर आप कुछ और चीजें भूल भी गए तो भी आप लॉजिकली अराइव कर सकते हैं उससे। तो आपको बेसिकली क्या नाम है, किस चीज से डील करता है, ये हमेशा याद रखना है। इस सारे कोर्स में तो आप स्टैंडर्ड्स ही करेंगे, ये सब स्टैंडर्ड्स करेंगे डिटेल में, और ये स्टैंडर्ड फिर फाइनल में भी आपके इनकी एप्लीकेशन डिफिकल्ट सिचुएशंस में। तो बी क्लियर अबाउट स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। अगर आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को अच्छी तरह सीए इंटरमीडिएट लेवल पे कर लेते हैं तो आप इसको फाइनल लेवल पे भी ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और वॉट एवर स्टूडेंट्स इज रिटर्न इन योर मॉड्यूल, इट इज बेस्ड अपॉन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये मैंने आपको पहले भी कहा है। और स्टूडेंट्स, एक इस सब्जेक्ट के बारे में वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, कि कई बार स्टूडेंट्स जो है इसमें इस सब्जेक्ट को क्योंकि इसमें कई नई सारी टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, तो स्टूडेंट्स उसको बोर हो जाते हैं करते हुए, या उसको उनका इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होता। तो ये आपको चीज नहीं करनी है स्टूडेंट्स। आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना है सब्जेक्ट में अपने, और उसको अच्छी तरह से अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें किसी भी सब्जेक्ट को करने के लिए 4 स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स। ऑलवेज रिमेंबर दीज 4 स्टेप्स। फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग। Second thing is, so understanding is what you are gaining right now, or what you have gained from your seeing of lectures, or what you would when you would be reading. Okay. So another request of mine is, students, do not assume that okay, we have seen the video, our work is done. No, 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 no. This is not the right approach towards any subject. Students, unless and until you would open your books, you would open your module, you would apply your mind, you would
सी द थिंग्स कि अरे अब ये टॉपिक आ गया, उस टॉपिक में तो पिछले वाले में तो ये था। जब तक आप उसको एनालाइज नहीं करेंगे, कोरिलेट नहीं करेंगे, तब तक आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके नहीं आ सकते। ओके। यस केशव, क्लास स्टार्ट्स एट 6 p.m. It starts at 6 p.m. to 8:30 p.m. Yes. So first step is understanding, and second step is remembering or learning. Third step is application, and fourth is writing. So what happens is most of the students leave at the understanding stage. They say okay, वीडियो देख लिया, 2 बार देख लिया, और that is sufficient. And then they when they come out of the exams, when they come out of the papers, they would curse. They would say एकदम ब्लैंक हो गए भाई, दिमाग ही नहीं चला, बिल्कुल हाथ ही नहीं चला, बिल्कुल पेपर आंखों के सामने अंधेरा छा गया. These kind of excuses, 100 excuses we hear from the students. So please students, my request to all of you is, do not make such kind of lame excuses. Do not waste your precious time. Okay, this is your valuable time, precious time. All of you are young. Do not waste your time, guys. Make valuable use of your time. And I would exhort you, all of you, uh, to try to achieve exemption in this paper. And once you develop interest in this subject, you can do wonders, guys. कोई 60 मार्क्स लाना इसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल ये है कि हमारी अप्रोच ही ठीक नहीं है. हम एक बार में ही पढ़ते नहीं पूरा. जो भी आपको स्टूडेंट्स एफर्ट लगाना है, वॉट एवर एफर्ट यू वांट, एक ही बार लगाओ ना. क्यों आपको बार बार पेपर देना है? आई फेल टू अंडरस्टैंड. क्यों आपको बार बार पेपर देना है? जैसे अभी आपका नेक्स्ट एग्जाम सितंबर 24 में है, तो अभी 4 महीने पड़े हैं. अब एक ग्रुप के लिए तो काफी है. जो स्टूडेंट्स बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं उनके लिए कम है. तो अगर अभी अब स्टूडेंट्स आप सोचे कि मैं अभी स्टडी स्टार्ट करूं और बोथ ग्रुप्स दे दूं, तो स्टूडेंट्स इट वुड बी डिफिकल्ट. तो अगर आप एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी टाइम बहुत ज्यादा नहीं है. इट इज जस्ट एप्रोप्रिएट. शॉर्ट भी हो सकता है. सो जब आप टाइम डिवोट करेंगे, मॉड्यूल अपना पढ़ेंगे, लर्न चीजें करेंगे, हम तो आपके लिए एक फैसिलिटेटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके, लेकिन पढ़ना तो आपको ये. सो अगर आप लर्न ही नहीं करते, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप रिमेंबर ही नहीं करते, जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जो डेफिनेशन है, अगर आप उसको रिमेंबर ही नहीं करते, तो आप उसको अप्लाई कैसे करेंगे और ये लिख कैसे पाएंगे? ऑब्वियसली आप ब्लैंक हो जाएंगे पेपर में. एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, ऑडिटिंग इज फुल ऑफ technical terms, so you have to remember their meaning as it is, as far as technical terms are concerned. So other things you can write in your own words, like there is a term misstatements. You have read misstatements in objective of an independent auditor. Yes guys, you have read the term misstatements in essay 200, in your chapter 1,
You have read the term misstatements. So we would be studying about this term in detail in chapter 3. Okay. So there is this term misstatement. So broadly, you can understand that misstatements can be due to errors or frauds. Okay, misstatement क्या होती है? गलती. लेकिन हम ऑडिटिंग में उसको मिस्टेक नहीं लिखते, हम उसको मिस स्टेटमेंट लिखते हैं. सो देयरफॉर इन द एग्जाम्स यू हैव टू यूज द वर्ड मिस स्टेटमेंट्स. इफ यू यूज द वर्ड मिस्टेक्स, a cross would be put on it and you would not get any credit. So this is just one of the examples. So auditing का जो आपका मॉड्यूल है, it is, as I have told you, it is based upon standards on auditing. Okay, तो standards on auditing में सारे technical words हैं, like misstatements, assertions, audit risk, inherent risk. ये सब आगे आएंगे आपको चैप्टर 3-4 में. ऑडिट एविडेंस, ऑडिट प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. सो दीज ऑल इंटरनल कंट्रोल, these all things we would be you would be studying in subsequent chapters. So you would have to write the same nomenclature. So that is also very important. You cannot use any other word other than misstatements while writing the objective of an independent auditor. Okay. Yes, Rashmi, you are saying misrepresentation. No, you can't write misrepresentation. Misstatements mean कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गलती हैं. वो गलतियां इंटेंशनल भी हो सकती हैं. मान लीजिए किसी ने मशीनरी रिपेयर एक्सपेंसेस, जो आइटम मशीनरी रिपेयर में जानी चाहिए थी, उसको मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया. सो इट इज ए मिस्टेक इन जनरल लैंग्वेज. हमारी बोलचाल की भाषा में ये मिस्टेक है, लेकिन ऑडिटिंग की लैंग्वेज में हम इसको क्या कहेंगे? मिस स्टेटमेंट्स. सो यू हैव टू राइट मिस स्टेटमेंट्स इन द पेपर. like there is a term reasonable assurance. Okay, so we have just now understood the meaning of reasonable assurance. Okay, that it is a high level of assurance. So you have to use this word reasonable assurance. You cannot replace this word with any other word. Reasonable assurance, and you have to write the correct spellings also. Remember, the word is assurance, it is not insurance. Sometimes students make such kind of silly mistakes. So whenever you see some technical term, some key term, do write once on your notebook. आप उसको नोटबुक पे लिख के तो देखें. Yes, who is making this drawing on the whiteboard? Please do not do this, guys. Why you are doing this? Yes, Mohammed, you are asking how many marks standards on auditing in exam. So there is a weightage, chapter wise weightage given on the BOS portal. There is no specific weightage as such to standards on auditing. As I've told you, all your chapters, most of your chapters are based upon standards on auditing. So there is chapter wise weightage. Like
Chapter 1 has 4-5% of weightage. Chapter 3-4 have greater weightage of 10 to 12%. These all chapters are based upon standards on auditing. Okay. Yes, is it clear? And students, my request to all of you is, when studying auditing, keep an open mind. See, remember that auditing is an interdisciplinary subject. सो स्टूडेंट्स, आपको लगेगा कि शायद हम बेकार की बातें कर रहे हैं, हमने चैप्टर 1 में तो किया ही नहीं कुछ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, ये सब कुछ आपका चैप्टर 1 में है जो मैं करवा रहा हूं। चैप्टर 1 के रिकॉर्डेड लेक्चर तो आप देख ही चुके हैं। सो ऑडिटिंग इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। लाइक से, क्या मतलब है स्टूडेंट्स इसका, इंटरडिसिप्लिनरी का? यस, एनीवन? यस, एनीवन? Auditing is interdisciplinary. What do we mean by these statements? Yes, anyone? Yes. Manan Kumar, that's good. You are doing job in a CA firm. So you are going to appear for the first time probably. Yes, it means that it is connected with many subjects. Like say if there is a company, okay, so then obviously there would be many laws applicable to it. Like Companies Act 2013 would be applicable to it. Income Tax Act would be applicable to it. Some labor laws would be applicable to it. So therefore we say that an auditor has to have knowledge of law. He should have knowledge of law. Yes, Aniket Jain, Ashtbhujadhari audit. Yes. So, and obviously it is related with accounts, because you are conducting audit of financial statements. Now, financial statements are prepared from account books and the underlying records. So, therefore, auditing is related with and is affected by many other disciplines. Therefore, we say that auditing is interdisciplinary in nature. Like it has relationship with accounts, it has relationship with law, it has relationship with other subjects like financial management. Okay, so and students, while studying this subject, again one more thing I have told you, that you have to be open minded. There is a word in Sanskrit, Hindi word, Sanskrit word, कूप मंडूक. एनीबॉडी, किसी को इसका मीनिंग पता है? कूप मंडूक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट?
proverbial frog in the well. अगर कोई फ्रॉग वेल के अंदर है तो उसको लगता है यही दुनिया है, क्योंकि उसको उतना ही दिखता है. ओके, सो यू do not become a frog in the well, guys. So that is very important. And one more thing, while preparing, students, do not delay the things. हमने वीडियो देख लिया लेकिन हमने मॉड्यूल तो खोला ही नहीं, कल करेंगे. नो, दिस इज द रॉन्ग अप्रोच. दिस शुड नॉट बी द अप्रोच. देर इज ए वर्ड, स्टूडेंट्स, प्रोक्रेस्टिनेशन. प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है बहाने करना, टाल मटोल करना. सो एक देर इज ए गुड quotation in English relating to procrastination. So I would like to share with you. So somebody has said that procrastination is my sin. Procrastination is my sin. I know that I must stop it. I know that I must stop it. In fact, I will do, but tomorrow. In fact, I will do, but tomorrow. Yes, students. तो आपको कुछ मतलब समझ में आया इसका? क्या मतलब है? Why procrastination is bad for you as students? Why procrastination is bad for you as students? एक आदमी प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ना चाहता है, वो कहता है लेकिन कल छोड़ेंगे. उसमें भी प्रोक्रेस्टिनेशन में भी प्रोक्रेस्टिनेशन है. So this is the common problem, common refrain. Why students you are not able to do well in the exams? Okay. Yes, students. आपने चैप्टर 1 पढ़ा है, तो कैन यू टेल मी गाइस, who is responsible for preparation of standards on auditing? Who prepares? आपके मॉड्यूल में नहीं है ये, फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपको स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज बढ़ानी है. You don't have to be a frog in the well. Yes, Satya Gupta, you are saying ICAI. Yes, it is right. So in ICAI there is Auditing and Assurance Standard Board. Auditing and Assurance Standards Board. AASP. So it prepares standards on auditing which are to be followed by auditors while conducting audit of financial statements. And again, guys, what is the, tell me, what is the definition of audit? Yes, Kabir, yes, you are right. Yes, Manan Kumar is saying to repeat the quotation. Yes, I was saying procrastination is my sin. I know that I must stop it. I will do it, but tomorrow. In fact, I will do it, but tomorrow. Yes, yes. Yes, come on, guys. So, Auditing and Assurance Board
is responsible within ICAI is responsible for preparation for this standards on auditing. So remember, I am also giving you a brief outview of this whole thing. Guys, there is a body, international body, IFAC, International Federation of Accountants. So our institute, ICAI, is also a member of this body. ICAI is member of this body. So at international level, there is an organization, International Auditing and Assurance Standards Board, which issues standards on auditing. So in India, we have Auditing and Assurance Standard Boards, which issues standards on auditing on the same lines. So therefore, these things are at global level, guys. These things are at global level. These are benchmarked at global level. So जो यूएस में ऑडिटर बैठा है वो भी उन्हीं स्टैंडर्ड्स को अप्लाई कर रहा है ऑडिट करते हुए, और इंडिया में जो ऑडिटर है वो भी उन्हीं स्टैंडर्ड्स को कर रहा है, फॉलो करते हुए ऑडिट कर रहा है. Yes, Rashmi. So I had asked for the definition of audit. So remember, guys, that audit is an independent examination of financial information of an entity. The entity may be profit oriented or not. So what is its meaning? The meaning of it is that it can be a business organization, or it can be for some other purpose, like for some charitable activities, like an NGO, okay, or like a society. And it is irrespective of its size or form. तो ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है या बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. और फॉर्म का क्या मतलब है कि उसका लीगल स्ट्रक्चर कैसा है, वेदर इट इज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, इट इज ए कंपनी, or whatever, it is a listed company. When, and last part is when such an exercise is conducted to express an opinion. Now this is the most important line. Do not forget this line. वो आगे वाला तो आपको याद रहेगा. Audit is an independent examination of financial information of an entity. लेकिन जो बाद वाला पोर्शन है वो आपको भूलना नहीं है. When such an examination is conducted with a view to express opinion. So audit का पर्पज है, always remember the purpose of audit is to express an opinion. Remember, guys. और आप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर हैं जो आपके ऐसे 200 में चैप्टर में दिए हुए हैं कि ऑडिटर ऑब्टेन्स रीजनेबल एश्योरेंस so that in what respect he obtains reasonable assurance that financial statements as a whole are free from material misstatements whether due to fraud or error. So यहां पे स्टूडेंट्स जो वर्ड हम इंपॉर्टेंट मिस कर जाते हैं वो है एज ए होल, कि अल्टीमेटली कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एज ए होल पूरी बिग पिक्चर देखने के बाद ऑडिटर देखेगा कि उसका जो भी मिस स्टेटमेंट्स हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, क्या ये फ्री हैं मिस स्टेटमेंट्स में, इनमें कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, और अगर मिस स्टेटमेंट है तो उसका उसके ओपिनियन पे क्या फर्क पड़ रहा है वो उसको ऑडिट रिपोर्ट में देना है. यही ऑडिट प्रोसेस का आउटकम है, यही ऑडिट प्रोसेस का आउटकम है. ओके Yes, Aniket, you are saying that you have seen news on Z Business today that ICAI has banned 3 firms. Does it have any relation with the audit? Yes, definitely, guys. So, students, जैसे कि
मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इस पेपर का क्या नाम है, सब्जेक्ट का क्या नाम है, ऑडिटिंग एंड एथिक्स। सो एथिक्स एक कोड ऑफ एथिक्स है जो आप सीए फाइनल लेवल में पढ़ेंगे। द ऑडिटर हैज टू फॉलो कोड ऑफ एथिक्स। ही हैज टू कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस with the ethics, with the ethical principles. ओके, सो अगर ऑडिटर उन प्रिंसिपल्स को नहीं फॉलो करता या उसकी वॉयलेशन करता है तो ऑब्वियसली ही वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, एंड आईसीएआई और अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। ओके, yes, Soumya, you have raised a good question. You are saying, can auditor give complete assurance? Now students, ये भी point आपको अच्छी तरह से समझना है। Can auditor give complete assurance, or why does an auditor not give complete assurance? I frame it otherwise. So नहीं दे सकता complete assurance। क्यों नहीं दे सकता? ऑडिटर किसी चीज की गारंटी नहीं दे सकता कि इसमें कोई एरर या फ्रॉड नहीं है। वो क्यों नहीं दे सकता? उसके कई सारे रीजन हैं जिसको कि हम कहते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। दीज लिमिटेशंस आर इनबिल्ट इन द ऑडिट प्रोसेस इटसेल्फ, लाइक जैसे कि प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, लाइक एन ऑडिटर परफॉर्म्स हिज वर्क बाय सैंपलिंग। यस क्रिश, यू आर राइट। आप सपोज कोई एमएनसी है, कोई इतनी बड़ी कंपनी है, 300 करोड़ की टर्नओवर है, सो वेदर द ऑडिटर इज सपोज टू डू चेक एवरी ट्रांजेक्शन, इट इज नॉट पॉसिबल, सो ही रिलाइज ऑन सैंपलिंग। ओके, सो एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिकल लिमिटेशन। there is another thing which is called legal limitation. So what is legal limitation, guys? Yes, can anybody give example of legal limitation? Legal limitation on the ability of auditor to obtain audit evidence. Yes, can you recall? Yes, guys, you have seen all the lectures, you have read the chapter 1 of module also. और स्टूडेंट्स, जब भी आप ऑडिटिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें डिसहर्टेन नहीं होना। जैसे जैसे आपका सिलेबस बढ़ेगा, जैसे जैसे आप चैप्टर्स करेंगे, जो टर्म्स आपको चैप्टर 1 में मुश्किल लग रही हैं वो आपको आसान लगने लग जाएंगी, क्योंकि वो टर्म्स अगले चैप्टर में डिटेल में आएंगी। यस अनिकेत, परफेक्टली राइट गाइस, सो वी आर हैविंग ए प्रीटी गुड बैच हियर. So you guys are putting a lot of effort. Yes, guys, I am very happy. So Aniket is writing can't force someone for evidence. Yes, the auditor can ask somebody, to say some responsible officer in the company to provide some document. If the company refuses to do so, is the auditor like a police officer? Does he have any investigative power? No. You have to understand that auditor is not an investigator. So अगर कोई उसको एविडेंस नहीं देगा तो वो ये देखेगा कि उसको रिपोर्ट कैसे करना है, कि उसको ओपिनियन पे क्या इफेक्ट है. So ultimately he has to finally give his audit report. So ये basic funda student you should never lose sight of. इस बेसिक फंडा को आपको कभी भूलना नहीं है. So like I tell you that
primary objective of an auditor is, yes, Aishwarya, your answers are reaching. Yes, you have also written correctly. So the primary objective of an auditor, of an audit, is not to dig out errors or frauds. Although the process which he is expected to follow, if some errors or fraud come to his notice, then he is bound to report. Then he would see what is the impact upon his opinion, whether he has to issue adverse report, adverse opinion, or whether he would give disclaimer. So all these things, all these terms, you would be studying in your subsequent later chapters. Yes, Manan Kumar Mistry, you are saying that you are not so well in English. So, but this class is for Pan India level. So anyway, I will try to explain to you in Hindi also. Yes, Swati, you are saying that if the company makes small deviations in every transaction so that auditor is not able to comply with. So look, Swati, the auditor performs audit in accordance with standards on auditing. Now, these are very high standards. And if the auditor follows those standards, then it is expected that he would be able to locate those errors or frauds. But it is quite possible that management may be very clever and it may have organized a well laid out scheme of fraud, which auditor may not be able to dig out even after following standards on auditing, or he may be led to believe on some fabricated documents. Say remember, auditor is not an expert in establishing genuineness of documents. He is not a handwriting expert, say. Okay. So therefore, if the auditor can show that he has followed all the standards on auditing in performing his audit, he has maintained adequate records, he has maintained adequate documentation, then he is not responsible. However, if he can't prove that audit was not carried out by him in accordance with standards on auditing, then he would be responsible. Okay. Yes, Swati, is it clear to you? Yes, one more question, guys. Tell me, is audit mandatory or voluntary? Yes, Krish, these things you would be writing, you would be studying in later chapters. Say when the auditor finds a fraud beyond a certain threshold limit, then in accordance with provisions of Companies Act 2013, he has to report to the ministry. Okay. He has to report to MCA. Yes. You would be studying all these things. That is why I'm saying, guys, many things would get clear to you as you move on. Okay. Yes, Aishwarya, you are right. It is mandatory for some and it can be voluntary also. It is not always legal mandatory. Like say for companies in India, every company has to get its accounts audited. It is provided in law. Okay. So, but say in case of a partnership firm or in case of a proprietorship firm, it can be voluntary exercise or it may be mandatory, say under some tax law.
say under Income Tax Act, which you would be studying later on your income tax classes, that if turnover of a taxpayer, if turnover of an SSC increase is beyond a certain limit, then he has to compulsorily get his accounts audited. So become it would become mandatory in such case under a tax law. Yes, Anamika, yes, you are right. Your message is reaching. So therefore, it is not correct to say that audit is always mandatory. It can be voluntary also. Say a partnership firm, it may get its accounts audited on its own. Yes, Rohit, your answers are reaching. You have written correctly that as per Companies Act, it is mandatory to get the accounts audited. Yes, Aniket, you are also right. Yes, Soumya, you are saying if auditor himself commit fraud, yes, then he would not only be guilty of professional misconduct, but he would also be charged for criminal offense. Yes. Clear, guys? And guys, who appoints auditor? Very general question. Yes, who appoints auditor? General. We are not talking specifically. Who appoints an auditor? Yes, management, honors, generally. So it is not some sort of thing that generally. Like in case of a company, auditor is appointed by shareholders at AGM. And in some cases, these are also appointed by some authorities, like in case of government companies, auditor is appointed by CAG. Yes, you have heard this name, guys, C and AG. What is the full form of it? He is an constitutional authority. He is a constitutional authority. C and AG. Yes, have you heard, guys, anywhere in the news, in social media, in newspapers? Yes, yes. Comptroller and Auditor General. So Comptroller and Auditor General is responsible for auditing government receipts and expenditure. He is an independent constitutional authority. Okay. So, yes, can anybody tell who is the present Comptroller and Auditor General? Yes, any general knowledge question. Nothing to do with your subject. Yes, Raviraj. Yes, well done. G.C. Murmu, yes. Shri Girish Chandra Murmu is Present Comptroller and Auditor General of India. So there is this topic, origin of auditing, in your module, guys. So I also want to touch upon this topic.
So the concept of auditing, the field of auditing, students, you have to understand is very old. So it has existed even in ancient times, like in during Mauryan Empire also, during the reign of Chandragupta Maurya. So you have heard the name of Kautilya, Chanakya. Okay, so he has written. There are references in his book Arthashastra, which was written in about 4th century BC. Okay, so there are references to auditing, like for periodic verification. So all these things were there in elementary form, in rudimentary form. ओके, सो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होती गई, सो वैसे वैसे ऑडिटिंग का प्रोफेशन भी डेवलप होता गया. सो जैसे सन 1800 के करीब जैसे यूके में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो जैसे बिजनेस ग्रो हुआ, कम बिजनेसेस जो है वो कंपनी की फॉर्म में बनाए जाने लगे. यूके में ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844 पास हुआ, जिसमें कि कंपनीज एक अलग से लीगल एंटिटी फॉर्म हुई. तो उसके साथ साथ ऑडिट प्रोफेशन भी डेवलप करता गया, ऑडिटर्स की डिमांड भी बढ़ती गई. व्हाई? बिकॉज देयर वाज ए नीड टू हैव एन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म for lending credibility to the financial statements. That is the crux, guys. That is the crux. You have always to remember that audited financial statements enhance the credibility of financial statements. These increase the degree of confidence of users in financial statements. तो यूजर्स कौन कौन होते हैं स्टूडेंट्स, बता दो जरा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स कौन कौन होते हैं? यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स कौन कौन होते हैं? यस, कैन यू टेल? आपने अकाउंट्स में पढ़ाई होगा. यस, गवर्नमेंट, lenders, creditors, investors, right? All of you are right. Soumya, Raviraj, Rashmi Kumari, Aishwarya. And remember, students, our institute, the Institute of Chartered Accountants of India, was set up in 1949, just after independence. It was set up in 1949 to regulate the profession of chartered accountancy in our country. Okay, so there is a law, there is a act known as Chartered Accountants Act 1949. So our institute was formed by under this act. So there are provisions in this act which regulate the profession of chartered accountancy, like how institute has to function, functions of the council, disciplinary action against the members. So all provisions are all there. Okay, so remember this also. Yes, Muhammad, who was the first CA of independent India? He was Shri Kapadia. Shri Gopal Kapadia.
Yes. Yes. GP Kapadia. Yes. So many of you are answering in chat box also. So guys, let's do this question. Test your understanding one. Can you read the question? Test your understanding one. Just read the question and please do not see the answer which is given at the end of module. So the proper way to approach this subject, to study this subject is first understand. आप अपने दिमाग में समझिए कि क्या मैंने समझा है, उसको फिर लर्न कीजिए, एक चीज को दूसरी के साथ लिंक कीजिए, ठीक है, और फिर आप सोचिए, आप उसको अप्लाई कीजिए, फिर देखिए आपका आंसर क्या है, और फिर उस आंसर को टैली कीजिए जो कि आपके सॉल्यूशन में दिया गया है. दैट इज द राइट वे. दैट इज द राइट वे. इस बात से मत घबराइए कि मेरा आंसर गलत है. यस, रीड द क्वेश्चन. Lalji Bhai has purchased shares of a company listed on NSE. The audited financial statements of company provide picture of healthy financial performance, having robust turnover, low debt, and good profits. On the above basis, he is absolutely satisfied that money invested by him is safe and there is no chance of losing his money. Do audited results and audit reports of company provide such assurance? To Lalji Bhai. No, Anamika, yes. Say, guys, now there is a trap laid for you in this question. अब एश्योरेंस तो प्रोवाइड करता है ऑडिटर. क्या एश्योरेंस प्रोवाइड करता है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो फ्री हैं मिस स्टेटमेंट से. यही एश्योरेंस प्रोवाइड करता है ना. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो लालजी भाई ये सोच रहा है कि क्या जो उसने पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया वो सेफ है, उसको कोई नुकसान नहीं हो सकता. ये शेयर मार्केट की प्राइस तो कई फैक्टर से इफेक्ट होती हैं. वो किस टाइम मार्केट में एंटर हुआ, कंपनी में क्या डेवलपमेंट हुई, कोई रेगुलेटरी डेवलपमेंट है, कोई फ्यूचर में कंपनी की न्यूज आ गई, तो शेयर मार्केट तो कई फैक्टर से इफेक्ट होती है. तो वो ऑडिट रिपोर्ट इस बात की गारंटी कैसे हो सकती है, इस बात की एश्योरेंस कैसे हो सकती है? गारंटी तो होती ही नहीं, एश्योरेंस भी कैसे हो सकती है कि उसका पैसा सेफ रहेगा? Remember that auditor gives assurance, he obtains reasonable assurance that financial statements as a whole are free from material misstatements. कि ऑडिटर सिर्फ इतनी एश्योरेंस देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं है, and they have been prepared in all material respect in accordance with applicable financial reporting framework. Yes, Anamika, have you understood now? Anamika Vishwakarma, yes. Yes, Krish, Aishwarya, you are stating it correctly. अनामिका विश्वकर्मा, आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? यस अनामिका.
Yes, okay. So Anamika is saying that the point is clear to her. So guys, एक आपने वर्ड देखा होगा इसमें, मेटीरियल। मेटीरियल में स्टेटमेंट्स, मेटीरियल एक कंसेप्ट है, एक टॉपिक है जिसको कि इसका एक सेपरेट एसे है, ये इतना वाइड टॉपिक है। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है एसे 320 320 के ऊपर। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि मेटेरियल का मतलब होता है समथिंग सिग्निफिकेंट, कि अगर वो इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग है तो जो यूजर है उसके इकोनॉमिक डिसीजन पे फर्क पड़ेगा। ओके, यस मनन, यू आर सेइंग मी टू एक्सप्लेन इन हिंदी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रीजनेबल एश्योरेंस देता है ऑडिट, किस बारे में, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज ए होल पूरे तौर पे कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, वेदर इट इज ड्यू टू एरर और फ्रॉड। ओके, सो एक बात और समझिएगा कि एरर्स जो हैं वो हमेशा अनइंटेंशनल होते हैं और फ्रॉड इंटेंशनल होता है। एरर्स अनइंटेंशनल होते हैं, जेन्युइन गलतियां, फ्रॉड्स इंटेंशनल होता है, जो कि किसी अल्टीरियर मोटिव से किया जाता है। तो ऑडिटर जो है, जो ऑडिट रिपोर्ट है, उसका ओपिनियन इसी बात की रीजनेबल एश्योरेंस देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ए होल मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री हैं, उनमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। तो इसका जो है, जो शेयर्स लालजी भाई ने जिनमें इन्वेस्ट किया हुआ है, पैसा लगाया हुआ है, उसकी शेयर प्राइस के बारे में तो कोई एश्योरेंस नहीं दे रहा ऑडिटर। शेयर प्राइस तो कई चीजों पे इफेक्ट होती है। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है मार्केट में क्या न्यूज चल रही है, क्या फिस्कल पॉलिसी है, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्या कंपनी के बारे में न्यूज है। ऑडिटर इस बारे में किसी को कैसे कैसे एश्योर कर सकता है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं? इस बारे में तो कोई एश्योरेंस नहीं देता ऑडिटर। वो तो आपका एक इंडिविजुअल डिसीजन है, इंडिविजुअल चॉइस है, आपने ठीक ठाक कंपनी देख के उसमें उसके शेयर में पैसा लगा रखा है। यस मनन कुमार, इज इट क्लियर टू यू? यस, नाउ गाइस, कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं। देयर आर सम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। सो सम क्वेश्चंस आई हैव टेकन from your model mock papers, and some questions are new. So I would request you to try your hand at these, ताकि आपको इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू समझ में आ जाए। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग is one of causes of inherent limitations of audit of financial statements. Explain. So कैसे आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे? हाउ वुड यू, क्या मतलब क्या है पहले इस क्वेश्चन का? पहले तो ये समझिए इसका मतलब क्या है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग itself is one of causes of inherent limitations of audit of financial statements. Explain. आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया स्टूडेंट्स? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट पढ़ी है आपने, जिसकी वजह से ऑडिट गारंटी नहीं दे सकता कि कोई इसमें एरर या फ्रॉड नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, 100% एश्योरेंस नहीं दे सकता, वो एक रीजनेबल एश्योरेंस ही देता है। यस, एनीवन?
Yes, Ravi Raj is correct. Anyone who has not understood the question? Yes, Ajit ji. हेलो अशोक। आप उसको इंटरेक्टिव बना दीजिए, स्टूडेंट्स बात कर सकें। वन बाय वन देखना जरा। Good evening, sir. Yes, Priyanka. Priyanka Pandey, you are in the earlier batch also? Yes, sir, but due to some uncertainties, I am not completing my subject. Okay, so I remember your name. You were in the batch one also. Yes, sir. Yes. तो Sir, बताइए प्रियंका, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? yes, sir. It's about the inherent limitations of audit. तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? Sir, inherent limitations is not a absolute assurance. It's नहीं नहीं, prob- क्वेश्चन आप समझिए। क्वेश्चन क्या है कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इटसेल्फ इज वन ऑफ कॉजेज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तो आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना है। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, मैनेजमेंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है तो इसमें इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ सब्जेक्टिव जजमेंट्स। आप कहीं एस्टिमेट्स बनाने होते हैं, आपको प्रोविजंस वगैरह बनाते हैं कि नहीं? yes, sir. तो उसमें क्या, उसमें वो एक सब्जेक्टिव चीज है, सब्जेक्टिव, उसमें जजमेंट इन्वॉल्व है। कौन सी पॉलिसी फॉलो करनी है, कौन सा मेथड चूज करना है। ठीक है। तो इससे जो है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये अनसर्टेन हो जाता है। इसलिए ऑडिटर जो है एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाता, और ये कॉज है इनहेरेंट लिमिटेशन का। और दूसरा इसमें आप लिखेंगे कि इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल कंट्रोल कौन, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताइए मेरे को? मैनेजमेंट की। सर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इंटरनल कंट्रोल की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। दो आदमी आपस में मिल गए, उन्होंने कोई सिस्टम जो कंपनी ने बनाया हुआ उसको बाईपास कर दिया। ठीक है। यस सर। यस तो सर, उससे भी दे तो क्रिएटेड फाइनेंशियल द रिपोर्टिंग इफेक्ट होगी। यस सर, दे क्रिएट फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स। हाँ, तो ये आपको चार लाइनें लिखनी है इसमें बस। तो ये अनिकेत, क्रिस, यू आर राइटिंग करेक्टली। ऐश्वर्या, यू आर ऑल्सो स्टेटिंग करेक्टली। तो स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? और किसी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो बताइए। इसमें सिर्फ यही, मान लो ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है तो आपको सिर्फ ये चार लाइनें लिखनी है। और जी आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, मैं दिखाता हूं आपके मॉड्यूल में कहां दिया हुआ है। सर मॉड्यूल में 1.14 पेज पे है, फर्स्ट पॉइंट ही है हाँ, ये। तो आपने ढूंढ लिया ना, तो फिर आप आंसर देने में क्यों, देखिए। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स मेकिंग मनी जजमेंट्स बाय मैनेजमेंट। These judgments may involve subjective decisions or degree of uncertainty. So, therefore, auditor may not be able to obtain absolute assurance. Okay? और दूसरा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनती हैं वो इस प्रेमिस पे बनती हैं, इस एजम्पशन पे बनती हैं कि जो इंटरनल कंट्रोल कंपनी ने अपना सिस्टम डिवाइस किया हुआ है कंपनी चलाने का और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, वो ठीक ठाक काम कर रहा है। ओके, अगर अ, वही किसी वजह से उसमें कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है तो ये इंटरनल कंट्रोल्स की एक लिमिटेशन है। कंट्रोल्स ने ठीक तरह से काम नहीं किया तो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो भी अनरिलायबल होगी। तो ये दो लाइन चीजें लिखनी है बस इसमें। 3 या 4 नंबर का आपका हो गया। आप ऐसे क्वेश्चंस को अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। आपको रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ बात समझनी है कि इसमें क्या वो कह रहा है। सब्जेक्टिव जजमेंट और इंटरनल कंट्रोल वाला पॉइंट, ये दोनों आपके कीवर्ड्स होगा इसमें। अब इसको आपको थोड़ा एक्सपेंड करके लिख देना है। यस।
किसी और स्टूडेंट की इस क्वेश्चन के बारे में कोई क्वेरी है? यस, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यस, रीड दिस सेकंड क्वेश्चन। तो ये टॉपिक वैसे अभी आज हमने डिस्कस नहीं किए, लेकिन आई प्रज्यूम कि आपने लेक्चर्स देखे हुए हैं और मॉड्यूल आप चैप्टर 1 आपने पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स, इसलिए जब भी आप लाइव सेशन में आए, तो जिस जो भी लाइव सेशन है उसका लेक्चर्स देख के आए और मॉड्यूल पढ़ के आए, अपना चैप्टर पढ़ के आए स्टूडेंट्स। यस रोहानी, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इनहेरेंट लिमिटेशन इंप्लाइज दैट नो ऑडिट रिपोर्ट विल बी फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस। यस, दीज लिमिटेशंस रोहानी ये हर एक ऑडिट में प्रेजेंट होती हैं। इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, एक आगे टॉपिक आएगा चैप्टर 3 में ऑडिट रिस्क का, कि इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से हर एक एंगेजमेंट में रिस्क रहता है, हर एक ऑडिट में रिस्क रहता है कि ऑडिटर गलत ओपिनियन ना दे दे, जिसको हम ऑडिट रिस्क कहते हैं। कि मेरा ऑडिट का ऑब्जेक्टिव मीट आउट ना हो, ऑडिट फेल हो जाए, तो ऑडिट रिस्क हमेशा हर एक एंगेजमेंट में रहता है। और स्टूडेंट्स, जब भी एक वर्ड बार बार यूज हो रहा है, एंगेजमेंट। ना, एंगेजमेंट का क्या मतलब है? एंगेजमेंट मींस जब हम किसी आदमी को कुछ काम करने के लिए कहते हैं, लाइक आई हैव एंगेज सम इंजीनियर। तो सिमिलरली, आई हैव एंगेज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट टू कंडक्ट द ऑडिट। सो देयरफॉर इट इज एन एंगेजमेंट। तो ऑडिट एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है, रिमेंबर ऑलवेज, ऑडिट इज एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। Yes, arrangement to do something. Yes, Aishwarya, right. Yes, सेकंड क्वेश्चन समझ में आया आपको स्टूडेंट्स? ये स्टूडेंट्स मेरे को बताइए, आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? Yes, yes. In this question, Krish, the engagement is external. Yes, Ravi Raj is answering. Yes, any student who wants to ask. स्टूडेंट, आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं मेरे से इंटरेक्टिवली। आप बोल सकते हैं अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो। Yes, anyone who wants to ask. ये स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट पूछना चाहता है ये? सर ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट का है। यस, सो यू आर प्रियंका? यस। यस सर। यस प्रियंका, मैं क्वेश्चन एक बार आपको स्टूडेंट्स हिंदी में भी बता देता हूँ। केएसटी लिमिटेड एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है। इट अपॉइंट सीएटी
to provide it an assurance report on financial statements prepared on historical financial information. वो सीएटी को कहती है कि आप हमें एक एश्योरेंस रिपोर्ट दो जो कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे बनी है. ओके, तो जो आपको ये पता है कि जो ऑडिट होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे बनती है. हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी पता है, जो इवेंट्स पास्ट में हो चुके हैं उसको हम हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन कहते हैं. जैसे कि परचेज मेरी हो चुकी है, सेल्स हो चुकी है, वो ये सब कोई एसेट मैंने परचेज कर ली है, ये सब पास्ट इवेंट्स हैं. ओके, so the characteristic of such an engagement, yes Hemant, if you have joined recently, then I would request you to see the video later on. So the characteristic of such an engagement that it involves gathering of sufficient appropriate evidence on basis of which limited conclusions can be drawn by practitioner. तो आप देखिए स्टूडेंट्स, दो टर्म हैं आपके मॉड्यूल में, आपने पढ़ा होगा और लेक्चर्स में भी देखा होगा. दो टर्म है, एक है ऑडिट, एक है रिव्यू. ठीक है, दोनों एश्योरेंस एंगेजमेंट है, दोनों एश्योरेंस देती है, लेकिन ऑडिट जो है वो एक रीजनेबल एश्योरेंस देती है जो कि हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, और रिव्यू जो है वो एक लिमिटेड एश्योरेंस देती है, वो एक लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है. और उसमें ऑडिटर रिव्यू एंगेजमेंट में अपना ओपिनियन नहीं देता, ही गिव्स ए कंक्लूजन, और वो सारे प्रोसीजर्स नहीं फॉलो करता. इसमें वो एक लिमिटेड फ्यू प्रोसीजर्स फॉलो करता है, जिनके बारे में ये सारा टॉपिक है डिटेल में, ये आपके सीए फाइनल में आएगा. अभी इसका सिर्फ ओवरव्यू है. तो आपको इतना समझना है कि ऑडिट और रिव्यू में क्या फर्क है. रिव्यू माने जैसे कि कंपनीज जो है अपना क्वार्टरली रिव्यू करवाती हैं. ओके, क्वार्टरली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू करवा लेती हैं जो से लिस्टेड कंपनीज जो है. सो it is not a reasonable assurance, it is a low level of assurance as compared to audit. So although sufficient appropriate evidence is gathered on the basis of which limited conclusions are given, सिर्फ कुछ लिमिटेड कंक्लूजन ही देते हैं, और उसका फीचर ये है रिव्यू का कि इट इन्वॉल्व्स फ्यूअर प्रोसीजर्स. इसमें सिर्फ ऑडिटर इंक्वायरी कर लेता है, कुछ लोगों से कंपनी का पूछ लेता है. ओके, या कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर्स कर लेता है. इन सब के बारे में आप बाद में पढ़ेंगे ये चीजें क्या होती हैं. ठीक है, तो ये रिव्यू एंगेजमेंट है. बहुत लोगों ने ठीक लिखा है, ये रिव्यू एंगेजमेंट है. यस प्रियंका, आपको समझ में आ गया? यस सर, अंडरस्टूड ना. ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स. ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. In this context, what is meant by independence? Explain with an example. स्टूडेंट्स, ये इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट डिटेल में चैप्टर, लास्ट चैप्टर में आएगा, आपके चैप्टर 11 में, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. लेकिन यहां भी इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को चैप्टर 1 में आपका थोड़ा टच किया गया है. तो आप मेरे को बता दीजिए कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है. क्या आप समझते हैं ऑडिटर इंडिपेंडेंट है, इसका क्या मतलब है? Yes, anyone who wants to interact? Sir, independence implies that judgment of a person is not subordinate to the wishes or directions of another person. Yes, right. So बेसिकली इसका मतलब ये, इंडिपेंडेंस का मतलब है कि ऑडिटर किसी और की डायरेक्शंस पे काम नहीं करता, वो अपना एक जो फैक्ट्स हैं उसके बेसिस पे डिसीजन लेता है. जो उसने एविडेंस, आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद ऑब्टेन किया, उसके बेसिस पे वो कंक्लूजन्स ड्रॉ करेगा और अपना ओपिनियन बनाएगा, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा. जो कंपनी का ऑनर है, जो उसके प्रमोटर्स हैं, उसकी डायरेक्शन पे काम नहीं करेगा.
So independence basically means that he is acting not according to the wishes or directions of somebody else. He is not acting according to the wishes or directions of some other person. He is taking decisions on the basis of objectivity. Okay. एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल. वो एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है मॉड्यूल में, देखिए आपका. सपोज अगर आपका ब्रदर है मान लीजिए, ठीक है, आपका कोई फैमिली मेंबर है, आपका किसी का कोई बेटा है, आप और आप उसी के अकाउंट्स का ऑडिट कर रहे हैं, तो क्या आप अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे पाएंगे? नो सर. यस सुनील, यू आर राइट. यस अनिकेत, आप पूछ रहे हैं कि क्या रिव्यू एंगेजमेंट के और कौन से दो फीचर्स हैं. एक तो फीचर ये है कि फ्यूअर प्रोसीजर्स हैं, और दूसरा है कि लो लेवल ऑफ एश्योरेंस एज कंपेयर टू रीजनेबल एश्योरेंस, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस. यस. फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप. Auditor's objective is to obtain a reasonable assurance as to whether financial statements as a whole are free from material misstatements. Elaborate meaning of reasonable assurance. ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल आप सब लोग कर पाएंगे. सर इसमें रेफरेंस देना होगा ऐसे 200 का में. हाँ, आपको सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस का मीनिंग एक्सप्लेन करना है. वो आप यही लिखें कि रीजनेबल एश्योरेंस इज ए हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस. इसी को थोड़ा सा आपको 3-4 लाइनों में इलेबोरेट करना है. और ऐसे 200 का ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट पार्ट, वो उससे भी आप लिंक कर सकते हैं. यस प्रियंका. यस कोमल प्रीत, यू आर ऑल्सो स्टेटिंग करेक्टली. और स्टूडेंट्स एक बात और है, जो आप चैप्टर्स में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपके डिफरेंट आएंगे. जो आप स्टडी करोगे, जो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स में देखोगे या जब मॉड्यूल्स में देखोगे, तो अगर आपको कुछ और जानने की इच्छा है, तो वो सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं आईसीएआई की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं. आईसीएआई का आप होम पेज खोलेंगे, ICAI.org, रिसोर्सिस में जाएंगे, तो रिसोर्सिस के अंदर एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स हैं. ओके. तो ये सारे एसेज, इनमें एसेज भी हैं. तो जितने सारे ये एसेज हैं, इसको हम एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स कहते हैं. क्या कहते हैं? एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स. आप कहोगे तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी एक नेम है, तो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स अलग से नाम क्यों है? जेन्युइन क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा. कोई पूछना चाहता है इस बारे में? यस सर, प्लीज एक्सप्लेन. यस. तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग तो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एप्लीकेबल होते हैं. उसके अलावा और भी एंगेजमेंट है, जैसे आपके चैप्टर में रिव्यू एंगेजमेंट और एश्योरेंस एंगेजमेंट ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. अब ये ऑडिट नहीं है, लेकिन एंगेजमेंट्स हैं. तो जो स्टैंडर्ड्स हैं, इनके लिए अलग से स्टैंडर्ड्स हैं. ये आपके सीए फाइनल में आएंगे. रिव्यू एंगेजमेंट के लिए अलग से स्टैंडर्ड हैं, SRE 2400 और 2410. ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए अलग से स्टैंडर्ड्स हैं. तो ऐसे स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज हैं. रिलेटेड सर्विस माने कि जिसमें कि ऑडिटर एश्योरेंस नहीं देता. ओके. तो ये हैं तो सारी एंगेजमेंट ही. जब भी आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से को काम करवाने के लिए एंगेज करते हो, तो उसको हम एंगेजमेंट कहते हैं. उसको क्या कहते हैं? हम एंगेजमेंट कहते हैं. तो ये सारे स्टैंडर्ड क्या हुए? एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स हुए. और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग
एंगेजमेंट स्टैंडर्ड का ही पार्ट है। ठीक है। और एक और स्टैंडर्ड्स है क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, की ऑडिटर को अपना काम क्वालिटेटिवली करना है, तो उसके लिए ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने SQC1 इशू की है, एक स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, वो भी आपके चैप्टर 11 में आएगा। तो SQC1 भी जो है सब एंगेजमेंट्स पे एप्लीकेबल होता है, वो ना केवल ऑडिटिंग एंगेजमेंट्स पे, रिव्यू एंगेजमेंट्स पे भी एप्लीकेबल होगा, वो आपका एश्योरेंस एंगेजमेंट से जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे है उस पे भी एप्लीकेबल होगा, हर एक पे एप्लीकेबल होगा। सो ऑडिटर हर एक काम अपना क्वालिटेटिव करना मांगता है, ये बात दिमाग में रखना। क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स अप्लाई टू ऑल एंगेजमेंट्स। क्लियर? यस, समबॉडी वांट्स टू आस्क। तो कोई भी आपको स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड डिटेल में पढ़ना है, कोई उसकी नॉलेज लेनी है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप जो बेयर स्टैंडर्ड्स हैं उसको भी रेफर कर सकते हैं। आप आईसीआई के होम पेज पे जाएंगे, www.ici.org, उसमें ऊपर टैब में रिसोर्सिस है, रिसोर्सिस के अंदर जाएंगे आप, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें सब स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे आपके पूरे एसेज। किसी भी एसे पे क्लिक करें तो पूरा एसे आ जाएगा, जो सारा का सारा आपका जो मटेरियल है मॉड्यूल में या जो भी आप ऑडिटिंग में पढ़ेंगे, ये मैंने आपको बताया लार्जली एसेज पे ही बेस्ड है। ओके। यस वरुण, you can get to Zoom. There is some on YouTube, if you see some patti is going on which some Zoom address is given, so you can log in from there. Yes, इन क्वेश्चन में से किसी और को कुछ पूछना है? ये स्टूडेंट्स किसी और को कुछ पूछना है? और स्टूडेंट्स आप, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप इन चीजों से ना आप उठ जाएं थोड़ा, कि भाई हम तैयारी कैसे करें, तैयारी तो करने से होगी ना। आप बार बार यही क्वेश्चन पूछते हो, हम कैसे पढ़ें, किताब खोलोगे तो पढ़ोगे, नहीं तो सोचते ही रह जाओगे। आप सोचते हो हम मैनेज कैसे करें, तो आप, अगर आपको जो सब्जेक्ट आपको पहले पकड़ना है आप उसको पहले पकड़ लीजिए। अगर आपसे इतना बर्डन नहीं हो रहा तो पहले एक सब्जेक्ट को देख लीजिए, उसको पकड़ लीजिए, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिए। इन बातों से थोड़ा, आप एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा इन बातों से ऊपर उठाओ, अपना थोड़ा लेवल रेज करो स्टूडेंट्स। यस। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको कि नहीं, बताइए। यस सर, समझ आ गया। आ गया? कौन? रोहित? यस रोहित, तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। सर जो बेसिक नीड्स हैं ऑडिटर, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के, वो पूछे हैं। सो हाँ। वो गाइड करता है ऑडिटर को कि किस बेसिस पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनने चाहिए, और वो नहीं नहीं उसके नहीं नहीं, अकॉर्डिंग। रोहित आप बेटा गलत समझ रहे हो, किस बेसिस पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं बननी चाहिए। फिर आप, हम गलत लिख देते हैं एग्जाम में, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना तो ऑडिटर का काम ही नहीं है, वो तो मैनेजमेंट का काम है। सर लाइक जो किस बेसिस पे बनते हैं और वो उसी बेसिस पे बने हैं क्या, ऐसा वो हाँ, एग्जामिन मतलब करते उसको हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की ये जरूरत है, नंबर वन, कि इट इट एंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी इन ऑडिट।
मतलब अगर एक स्टैंडर्ड है आपके पास, मतलब आपके पास स्टैंडर्ड्स हैं, तो कोई भी ऑडिटर है, मान लीजिए चाहे इंडिया में है, चाहे वो यूएस में बैठा हुआ है, चाहे वो यूके में बैठा हुआ है, ठीक है, ये जो इंडिया में स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी सिमिलर स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो भी उन्हीं स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम कर रहा है, इंडिया वाला भी इन्हीं स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि एक ऑडिट वर्क में यूनिफॉर्मिटी आती है। इससे क्या होता है, ऑडिट वर्क में यूनिफॉर्मिटी आती है, सबका काम एक स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क फिक्स हो गया। यस रोहित, यस सर। समझ आ गई। यस और यस। जब आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे तो इट प्रमोट्स ऑडिट क्वालिटी ऑल्सो। अगर आपने कोई काम एक जो एस्टेब्लिश्ड बेंचमार्क्स हैं उनके हिसाब से किया है, तो आपकी क्वालिटी अच्छी बनेगी कि नहीं। यस सर। यस। अगर आप स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं तो आप रिपोर्ट भी ठीक देंगे, आपकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, आप सारी चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए ये आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, वाई स्टैंडर्ड्स आर नीडेड की हेडिंग के अंदर। लेकिन उस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के और ऐसे एक केस सिचुएशन टाइप में आपके सामने दे दिया। तो ऐसी केस सिचुएशन से घबराना नहीं है, ऐसी केस सिचुएशन से घबराना नहीं है, आपको लिखना तो वही है, सिर्फ आपके सामने एक सिचुएशन दे दी है। यस रोहित, क्लियर है। यस सर। ठीक है। और कोई स्टूडेंट इन पांचों क्वेश्चन के बारे में कुछ पूछना चाहता है, या इस चैप्टर के बारे में पूछना चाहता है। सर केस स्टडी 2 का क्वेश्चन नंबर 1 में जो उसमें हाफ जो है ईयर, ना, जो आपके पास मॉड्यूल है हार्ड कॉपी, उसमें कॉरिजेंडम आया है, बाद में एक लाइन ऐड की है, एज रेफर टू इन लास्ट पैरा। वो लाइन ओरिजिनल पब्लिकेशन में मिसिंग है। अगर आप वेबसाइट पे जाके देखेंगे, मैं आपको क्वेश्चन केस स्टडी 2 ही दिखाता हूं। यस सर, जो आपके पास मॉड्यूल होगा, उसमें ये वाला पोर्शन मिसिंग होगा शायद। यस सर, दिस पार्ट इज मिस्ड। मिसिंग ना, तो ये यस जो सर। है आप वेबसाइट पे जाके देखिए तो कॉरिजेंडम डला हुआ है। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है। ओके सर। ओके सर। यस, और कोई स्टूडेंट पूछना चाहता है, बताइए। यस गाइस, वी आर हियर टू हेल्प यू। एनी डाउट, आपको ऑडिट का मतलब ना समझ में आया हो, इस चैप्टर में कोई भी आपको टॉपिक परेशान कर रहा है, आपको कोई दिक्कत आ रही है समझने में, तो बताइए। और मैंने आपको नॉलेज एनहेंसिंग के लिए बताया, अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो आप बेयर एसेस को रेफर कर सकते हैं, जो आईसीआई की वेबसाइट पे हैं। Sir, can you explain standards on यस related? रविराज, कैन यू स्पीक लाउडली, लिटिल बिट लाउडली। Okay, sir, can you hear me now? यस यस। Sir, can you explain or standards on related services? यस, so for this Raviraj, you have to first understand what are related services. Now related services, remember that related services do not, when an auditor performs related services, he does not give any sort of assurance. He just does, he simply does that work, and he reports on the basis of facts. Like suppose a company asks you to verify its debtors. So this is an example of related services. It is asking you to just verify its trade receivables by
performing some agreed upon procedures. Well, now what are agreed upon procedures? So the procedures which I and the company, my client, both have agreed. Okay, like I would take the balances from books of accounts. Okay, I would see that the balances in the books of accounts are same as given in the debtors list. I would reconcile, I would tally, I would send say letters to the debtors. Okay, so this is part of a work. This is part of limited work. So these such type of services are called related services. Another type of example of related services is, say a company comes to you or a client comes to you, an entity comes to you. They say that please help us in preparation of our balance sheet. So they give you raw data, you just compile the balance sheet. Okay, and you just give your report, not providing any assurance, not providing any comfort. You give your report that we have prepared your balance sheet on the basis of information provided by you, and these are the facts. We have done such things. You do not give any opinion, you do not give any assurance. So there are standards on related services also, which are known as SRS. So there is one SRS 4400 and there is one SRS 4410. Okay. And remember that quality control standard SQC1 is even applicable to these related services. So the benchmark has been set very high for the chartered accountants. They have to do the audit work qualitatively in respect of related services also, like of the kind which I have explained to you. Yes, Raviraj, Okay, is it sir. clear to you? Yes, sir, I understood that. So, sir, if some practitioner provides related services, he Yes. cannot provide assurance engagement as in the sense of audit because his independence will be compromised, right? No, it is not so that he can't provide uh, he can't do audit. That is why the word practitioner is used. Okay, okay, okay. Yes. Yes, anybody else? Hello, sir. Yes. Sir, tax audit is an example of related services No, engagement. it is an audit. Anoop. No, it is in the name. Arup Biswas. It is in the name. It is audit. It is to be performed in accordance with standards on auditing. Yes, So, Arup. sir, it what kind of engagement this is? On related services. Not the tax audit. Tax audit is an audit engagement. It is an assurance engagement. It is not a related service. As the name implies, it is an audit. Audit is mandated under income tax law. So it is an assurance engagement. Like audit is prescribed under Companies Act for every company. Similarly, audit is prescribed under income tax law for some assessees who fulfill some conditions. Yes, Arup. Okay, sir. Thank you. Okay. Yes, anybody else? Sir, give some examples of related services like. प्रियंका, रिलेटेड सर्विसेज का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे आपके और आपके क्लाइंट में एक एग्रीमेंट हो गया कि आप सिर्फ डेटर्स वेरीफाई करने हैं या सिर्फ क्रेडिटर्स वेरीफाई करने हैं, तो आपका काम उतना है, आप कोई उसमें एश्योरेंस नहीं देंगे, आप सिर्फ ये रिपोर्ट देंगे कि मैंने ये काम किया है और उसमें ये मिला, बस दैट्स ऑल। या आपका क्लाइंट आपको कहता है कि आप बैलेंस शीट बना दीजिए, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दीजिए,
इसको हम कंपाइलेशन एक्सरसाइज कहते हैं, ये ऑडिट नहीं है। समझ गए? ओके सर, ओके सर। यस। यस, yes guys, I am speaking non-stop. I am sitting here for you for last more than 2 hours. I have not taken a break. हेलो सर, Yes, Arup. अगर सर कोई मिसस्टेटमेंट रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट भी पकड़ा जाए तो उसे भी क्या रिपोर्टिंग करना जरूरी है? रिलेटेड सर्विसेज में कोई मिसस्टेटमेंट पकड़ा जाए तो यस सर, अकॉर्डिंग टू हाँ, तो फ्रॉड वो और एरर। अपनी उसमें लिखेगा ना कि मान लीजिए जो उसने डेटर्स की, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि वो उसका क्लाइंट के साथ था एग्रीमेंट कि आपने डेटर्स वेरीफाई करने हैं खाली, तो अगर मान लीजिए डेटर्स के किसी बैलेंस में डिफरेंस है तो वो रिपोर्ट करेगा। उसको किसी और को रिपोर्ट नहीं करना, उसको फिर क्लाइंट को ही रिपोर्ट करना है, क्योंकि ये उसके और क्लाइंट के बीच का एग्रीमेंट है। कोई ये स्टेचुटरी सर्विस नहीं है, कोई लीगल सर्विस नहीं है। Sir, what is assurance engagement? एश्योरेंस एंगेजमेंट में, यस अब्दान, एश्योरेंस एंगेजमेंट में 3 चीजें आती हैं। नंबर 1, एश्योरेंस एंगेजमेंट का ये याद रखो, बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि वो कंफर्ट प्रोवाइड करता है, वो कॉन्फिडेंस यूजर्स का इंक्रीज करता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। और एश्योरेंस एंगेजमेंट में 5 एलिमेंट्स होते हैं जो आपके मॉड्यूल में लिखे हुए हैं कि भैया उसमें तो 3 तो पार्टीज होंगी, प्रैक्टिशनर होगा, रिस्पॉन्सिबल पार्टी यूजर्स होगा। ठीक है। और क्या क्या चीज पे आप एश्योरेंस दे रहे हो वो होगा जिसको हम सब्जेक्ट मैटर कहते हैं, सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया। तीसरा जो है कि बेंचमार्क्स क्या होंगे, कि आप किन लॉज या रेगुलेशन या स्टैंडर्ड के हिसाब से वो एंगेजमेंट प्रोवाइड कर रहे हो। और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट और एविडेंस लेना है, प्लस रिटर्न रिपोर्ट देनी है। ये तो एलिमेंट्स होते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट के। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट, ऑडिट भी एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है। ऑडिट तो है ही क्योंकि ये कंफर्ट प्रोवाइड करता है। रिव्यू भी एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है क्योंकि रिव्यू में भी ऑडिटर प्रैक्टिशनर रिपोर्ट देता है जिससे कि कंफर्ट मिलता है, चाहे कंफर्ट का लेवल लोअर है। ऐसे ही एक एश्योरेंस एंगेजमेंट्स इन्वॉल्विंग प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन है। मान लीजिए कोई प्रोजेक्शन है, कोई फोरकास्ट है, उसके बारे में रिपोर्ट देनी है। अब उसमें ऑडिटर ये नहीं कहेगा कि ये फोरकास्ट अचीव होगा, इतनी सेल अचीव होगी। वो सिर्फ इस बात की एश्योरेंस देगा कि जो एजम्पशंस आपने फोरकास्ट को बनाने के लिए की हैं वो आपकी रीजनेबल है और दीज आर प्रॉपरली प्रेजेंटेड। तो ये एश्योरेंस एंगेजमेंट है, ये एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब है। Okay, sir. ये सब Thank you. ओके। Yes, Aniket, you are saying account making. Yes, bookkeeping work is banned under Companies Act. It is prohibited under 144. Bookkeeping work. Bookkeeping work. सर, Yes, Priyanka. सर, ड्यूटी ऑफ ऑडिट इन रिलेशन टू अकाउंटिंग पॉलिसीज में कौन से पॉइंट्स हम डिटरमाइन करेंगे? देखिए, अकाउंटिंग पॉलिसी में अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे पहले ये सोचिए। मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की, ऑडिटर की तो नहीं है ना। मैनेजमेंट, ये बात आपको कभी नहीं भूलना। यस सर। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो अकाउंटिंग पॉलिसी भी मैनेजमेंट चूज करेगी। यस सर। बराबर, ठीक है। यस सर। अब ऑडिटर को उसको इवेल्युएट करना है, वो ऑडिटर को उसको असेस करना है कि उसने अकाउंटिंग पॉलिसी ठीक चूज की कि नहीं, क्या वो किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को वायलेट कर रही है। ओके सर। उसका यही पर्पज है कि जो जो अकाउंटिंग पॉलिसी चूज की है वो अप्रोप्रिएट है, उसको असेस करना है
उसको खुद से चूज नहीं करना, वो मैनेजमेंट का काम है। ओके सर, Yes. अकॉर्डिंग टू दिस वो ऑडिटर अपनी ओपिनियन प्रोवाइड करेंगे। हाँ हाँ, फिर उसको देखेगा अगर उसने गलत चूज की है तो उसका क्या इफेक्ट है, ओके उसके सर, अंडरस्टूड। ओपिनियन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अल्टीमेटली सारे ऑडिट में, आप इंटर में चले जाओ, फाइनल में चले जाओ, सारे ऑडिट में बात घूम फिर के ओपिनियन पे आएगी। अल्टीमेटली बात ऑडिटर के ओपिनियन पे आएगी। सर ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग का, टू हाँ, ऑडिटिंग एक्सप्रेस का यही ओपिनियन। ऑब्जेक्टिव, ये कभी भूलना नहीं है बेटा आपको। ओके सर। यस, एनीबॉडी एल्स? Sir, what is the mean of ethics? यस, अनिकेत, ethics are moral principles governing one's behavior। जैसे Sir, it is someone else. एथिक्स जो है, आपको ये समझना है कि ऑडिट जो ऑडिटर करता है वो एथिकली करता है। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा, ये प्लीज डू नॉट मेक ड्राइंग्स। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो कि अ, जो कि जैसे कोई कोई डिसऑनेस्ट काम नहीं करेगा, कोई फॉल्स रिपोर्ट नहीं देगा, ठीक है, कोई अपनी ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर नहीं होने देगा, अपनी ऑब्जेक्टिविटी कम नहीं होने देगा, अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करेगा। तो ये सब चीजें प्रोफेशनल एथिक्स का पार्ट है। तो एथिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया और आप उस कंपनी में शेयर होल्डर हैं, तो यहां तो एक लीगल बार है कि एज पर कंपनीज एक्ट आप नहीं कर सकते। ओके, मान लीजिए आपने ये बात छुपा ली और आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या आप एथिकली काम कर रहे हो? यस अनिकेत? यस अनिकेत, मैं आपसे पूछ No, रहा sir. हूं। No, sir. No, sir. नहीं कर रहे हैं ना? ऐसे ही मान लीजिए आप किसी फर्म के ऑडिटर हैं। मान लीजिए फर्म आपको कहती है कि सर हम आपको ना 10 दिन के लिए आ, श्रीनगर भेजते हैं, आप जरा घूम के आइए, एयर ट्रेवल फ्री देते हैं आपको। ओके, आपके होटल की बुकिंग भी फ्री है, आप उसकी ऑडिट रिपोर्ट भी दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या आप एथिकली एक्ट कर रहे हैं? सर ये सब तो मुझे थ्रेट में आता लग रहा है। थ्रेट्स थे ना वो, पास थ्रेट्स। हाँ, थ्रेट्स, वो थ्रेट्स भी तो एथिक्स का ही पार्ट है। अगर थ्रेट है तो ऑडिटर को थ्रेट रिमूव करनी है या मिटिगेट करनी है, क्योंकि उसकी इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो रही है। आशीष जी, मैं 1-2 मिनट लूं। यस सर, यस सर, प्लीज सर। एक तो नमस्कार सर। नमस्ते नमस्कार। नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, एन एक्सेलेंट सेशन। आई वाज लिसनिंग। अरे सर, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। Yes, and my request to student is that they must pass in the first attempt. This is what Ashish ji we are telling everyone. Our objective is not to get an exemption, and the student has the capability and they have a capability. See, auditors have a different opinion. So your opinion and my opinion may differ. Yes. And 4 months are sufficient to prepare for both the group. Because those who are eligible in September 24, they have registered 8 months prior. Because that is the basis on which they are eligible. And you have nicely covered. I was seeing the standards, and I will tell the student, Karuna ji, welcome to the session. And I think Tanya ji is also there, no? Yeah, Tanya was there, sir. Actually, I was in Yeah, office. yeah, she So was there. now I had seen she earlier. left and I joined. Okay. नमस्कार मैडम। Namaskar, sir. Namaskar. Now, how I will remember the standards, like 200
there are 2 0. We can consider 2 O. So 200 is overall objective. And 210, there is a 10. So agreeing the terms of audit engagements, 220, 2 should be equal to 2. So there should be quality control. Audit documentation 2 plus 3 is 5. And A plus D, first alphabet and fourth alphabet is 5. 240 is, we can say opposite of 420. 24 and 42. If we 250 is a loss, so 2 plus 5 is 7. If we transpose 7, it looks like L. 260, we have to remember, those charged with governance. 265 is reporting internal control deficiencies. 299, joint audit of financial statements. So like this, all the standards, 300 series, 500 series. In 300 series, 200 standards are included. It is pertaining to risk and planning. Then 500 series, 600 series, 700 series. 800 series is not in the syllabus, specialized areas. And what I saw, there are good questions on reasonable assurance, limited assurance. Student rightly said that there can't be absolute assurance. There can be, if we check 100% of the transactions, we can give absolute assurance. So audit is very simple if we understand in a logical manner. Like Companies Act is there in Group 1, Corporate Law. So Chapter 9 is accounts and Chapter 10 is audit. So audit comes after books of accounts are written. So in audit, like when we go to a restaurant and we have ordered the food, when the bill comes, we do the audit. We take a menu card and see what is the rate per item. If we have given 3 roti order and per roti is 20 rupees and in the bill there are 4 roti or 5 roti. So we are doing an audit. We do this audit. I think student has understood, and there are questions. In review, we have a limited assurance because review we follow the analytical procedure. So there are two standards in review: 2400 and 2410. So 2410 is done, when there is an independent auditor. That means other than statutory auditor is doing a review. Then Ashish ji, is it right? 2400 is when the statutory auditor does the review. No, sir. 2410. उल्टा है, sir. Acha. 2410 is when the statutory auditor is doing. Yes. And 2400 is when the other auditor Yes. doing a review. So Yes. still we can remember 2400 means other. Yes. Other than statutory auditor. Yes. So this way we can, first if we remember, and see, somebody was asking standards on auditing. So like, in hotel when we go, there is a 3-star hotel or a restaurant. Also there is a grade given by the municipal corporation. So the standards are required. Why standard came? There is one example, one managing director, the funeral expenses of his father died. So the funeral expenses were debited to packing and forwarding expenses. That his father was packed and forwarded to heaven. So standards give, assurance. Like in our life also,
we buy the products which is a standard ISI mark or egg mark. So it's a very interesting subject. Ethics we see like in the Kautilya's Earthshastra, there was an ethics. The example, like Kautilya had two electricity lines. When he was working for official work, the official electricity line whose payment was made by the treasury, that was used. When he was not working officially, then the other electricity line was used. So I would like to thank Priyanka. She has agreed to give an exam in May 24. Otherwise, she was saying I will give in September 24. Okay. So those who have filled up the form for May 24, they must give this exam. There are always shortcuts to prepare. If we don't know, if we have not memorized, we can write from our common sense. Because one of the chapter in the syllabus is the special entity audit. So what is this special entity audit? Suppose there is a hospital audit, different types of entities, trust, partnership firm, educational institutions. So in educational institution, what will be the receipt from the student? Different courses, if there is a bus facility, the payment will be to the professors, rent. If there is a bus expenses in hospital, there will be receipt from the patients. The operation theater charges, payment to doctors, payment to nurses. So from the type of entity itself, we can write an answer in the special features of types of entities. In audit of banks, since there is a Reserve Bank of India Act 1934, Banking Regulation Act, we have to read that. Ethics part also we have to read. In ethics, SQC1 is also there. So this way, I see that audit which Karuna ji, if you can again write to Anand, I wanted 10 exams subject wise percentage. So that will give us an idea, where the students are finding difficulty in understanding the subject. Okay, sir. We'll do that. And the saransh of the audit need to be revised, because first we should explain, like we can also explain standards on audit, like how, though in intermediate we don't have Ind AS. So there is, but I think in intermediate we also talk about the IFRS and Ind AS in the first chapter. Overview, yes, sir. Overview. So similar way, there is IAASB, which issues IAS. So audit is always of the historical information. Audit cannot be of the prospective information, because that is an assurance. So all the auditing standards, like I had numbered, there are 38 essay. So there are 9 essay in 200 series, 6 essay in 300 to 499, which is on audit planning risk assessment. Audit evidence, there are maximum essay 1100. 600 are for other audits. So I found that 610 is in the syllabus, internal audit. 1 is there. So 600 is other auditors. 620 is experts. So in 700, there are 6 standards. And in 800 specialized services, there are 3 standards. 2 are in review, 3 are in other assurance, and related services or agreed upon services, there are 2 standards. So that makes total 45 plus 1 SQC1. So that is not essay. It is a quality control standards. And like Ashish ji rightly said, SQC1 will apply whatever may be. It applies to an entity.
and not to the auditee. It applies to an auditor. Yes. So any questions? It is and 28:32 and Ashish ji, heads off to your energy. Sir, Continuous talking and thank you for compliment, sir. yes. But Ashish ji, we want to work on this. The concepts, as you rightly said, there are technical terms. Yes. Assurance. First, we should explain them. Assurance, limited assurance, reasonable assurance. Then they will be able to understand those charged with governance. Yes. So governance we can explain, and those charged with the governance we can explain. Then risk. What is audit risk? Yes. So Very important, sir. Audit risk response. Then evidence. In our normal life also we ask for an evidence. Yes. Yes. So the audit evidence, there are 11 standards, and internal audit, like question came up for tax audit, concurrent audit, revenue audit. Certain things may not be in syllabus, but they will find it easier to understand it. And auditor's job starts, when the accounting job ends. Like, there was one question in section 144, accounting, one student said the auditor can't do accounting. Auditor cannot be both accountant and auditor. Because when we audit 200 is an independent examination of so he's right, accounting and bookkeeping services is 144A. There are 9 services. Ninth is any other service: internal audit, design and implementation of any financial information, actuarial services, investment advisory, investment banking, rendering of outsourced financial services, and management services. So these are under 144A, auditor not to render the services. And Karunaji, another message which I wanted to give, Yes, we should use social media. We have so many students on our tutor. These live classes are not very much popularized. I think weekly we can do a mass mailing to students, because we have all 3 live classes: foundation, intermediate, and final, so that more number of students can do these live virtual classes. yes, sir. This weekend we have done, and next week again we will be. And we want to give a message to all LVC faculty that we have to believe in the capability of the students, so they can do it, and everything is easy. We have to we as a teacher has to see how things can be very, very simple. And Right. maybe in the students' activities, if we can tell Picasa, like, there is a separate grant, 30,000. They visit special entities, hospitals, education institutions. And if we can compile audit report, like, the other day you were there or not, I was telling Megha that you have a specimen LLP, specimen memorandum articles for foundation law. Similarly, in audit, we can have, say, 20, 30 audit reports: one educational institution, hospital, bank. Then we have Schedule 3, Division 1 in accounts, company accounts. Sorry, law. Law. Companies. So maybe audit of company, that is not in syllabus, na? No, sir. Auditor, yeah. Company audit has been removed. Company audit is actually covered in corporate law subject, na?
So only 143 section we are covering in auditing subject. Appointment, this powers, duties and audit report and CARO part. I think if one or two questions are there, we can take it. Otherwise, we will close. Any students, they can unmute Yes, and sir. ask. Sunil has raised his hand Yeah, sometime Sunil, back. please go ahead. Rohit, please go ahead. Rohit Kumawat. Sir, tomorrow's schedule is not uploaded on the BOS portal. Rohit, And what is my request, Karuna ji? Make yes. a schedule of the full class. Let it change. If it changes, we will email a revised schedule. Right. So every day, as a student, it takes away time and other things. More or less sessions would have been planned in advance. And therefore, if you must be finding the new arrangement where at each level different faculty is coordinating, it becomes easier for the coordination and they are also participating. We will do that. If you have any technical question, you ask me. Yes, Anup? Arup? Yes, sir. Any question? You have raised your hand. Otherwise, put the hand down. Sir, I just want to ask you that the topic of professional skepticism, that is removed or within the other chapter, taken in the other chapters? Because I found this topic in the old syllabus, but I cannot find this. Acha, do you know the meaning of professional skepticism? And Karunaji, whether this word is written in any of the standard professional skepticism? SA 200, sir. Sorry? SA 200. Yes. See, what is professional skepticism, Arupji? It is a inquiring attitude. So we are a watchdog, not a bloodhound. Suppose if I write for say taxi fare, I live in Andheri to Churchgate, if I write 10,000 rupees as a taxi fare. So there should be a professional skepticism. Even if I go in Rolls Royce, this much taxi fare will not be there. So professional skepticism, see, my request to the students is whatever we need to understand as a concept to understand the subject, don't look whether it is in syllabus or not. Plus, if I want to get more marks, then I should be better than other students. So if I am checking 100 copies, 99 students have not written something which I write. I'm bound to get little more marks. So I would say it is in the syllabus. Sir, it is in chapter 11. Anyway, it is in chapter 11. And this is an essential part. This is a foundation of audit. The audit is not an arithmetical accuracy checking, which a computer does. So without professional skepticism, the audit, it is not an investigative attitude. There's a difference in investigative attitude. Okay, I think we can close. It is 8:40. Karunaji, you can propose vote of thanks to Ashish ji. Yes, sir. Oh, no, sir. There's no need, ma'am. There's no need. Thank you, Ashish Behan, sir. Thank you for Thank you, sir. imparting the knowledge, and thank you to Chairman, sir. And last but not least, all the participants who made this session successful. And definitely for the April month, it was the last session. And for May month, schedule will be uploaded, and all the recorded sessions are uploaded on the portal. So you can view the sessions, and there will be session schedule will be uploaded shortly. So you can visit the website. Tomorrow it will be there. With this, thank you. Ashish ji, you have written few pages. I was just going my WhatsApp. Yes. Yes, sir. I think I must have requested you to make some changes. Yes.
because you are from the historical place of Panipat. Yes, sir. Those was on 19th of March you had given me. So I had again sent you, sir, after elaborating. Please resend to me on WhatsApp. Okay. Now after this session, you can understand what we need to know. See, we can give little history of audit. Audit commenced as soon as the money came into existence. Like if we Yes, see the old definitely. movies, the Kautilya's and other movie, there was an audit. Yes, yes. When they were receiving the taxes, there was an audit. So audit is a checking, the audit Latin word audit, like that we can start. Yes, sir. Like how we start in accounting. And audit happens after the accounts are completed. In concurrent audit, it is simultaneous. Okay. And then we can explain only concepts. Okay. Like, this question on professional skepticism, limited assurance. So first assurance. Then it is to, I think in the book of IAASB, there are glossary. Yes, sir. There is a glossary in the IAASB. Okay. That glossary, we can pick up only the words which are required for our syllabus. I'll do that. I'll resend to you, and whatever changes you ask, I'll do that. And whether I got your IAASB point. has brought out glossary, Karunaji, you just check up. And whether IAASB glossary we can put on our website. Okay, sir. Sir, in IAASB also auditing pronouncement glossary is there where definitions are given. And whether they have updated the auditing pronouncements, find out that. Yes, sir. Because I remember, when earlier I was in IAASB, we had also come out, because for everything we come out with a parallel document. And just want to add one thing. Priyanka asked about ethics, and Priyanka sir gave example of restaurant menu, right? So when we went to restaurant and we ordered 3 chapati, and suppose the bill came for 5 chapati, a bill came for 2 chapati or 1 chapati, then ethically if we tell the restaurant manager that this bill should be for 3 chapati, because if we are paying less, then also it is not ethically correct. So just giving you one example. So you can. There is a total error. Yeah. The item is 100 rupees and they charge 10 rupees. Yes. This happens in shop also. There are 5 customers in a hurry. Shop owner charges less or gives more quantity. Right. So just to understand, when we receive the bill, now we tend to do audit that how much we ordered, two friends goes to a restaurant and the other friend makes some calculation error and gives a less amount in our share. Yes, definitely. Then also there is an ethical issue. Sir, I want to add something to what you and ma'am have said. So students, you have to understand that ethics do not come to you from just following rules. So it is something ingrained. It is something inbuilt in your character. It is something inbuilt in the spirit. So one has to follow the spirit of ethics. Remember this. Thank you. And whoever is going to appear in May examination, wishing them all the best. Yeah, all the best. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, every student, each and every student. So it's over, guys. So we'll see you on next session. So schedule, as the ma'am has told, schedule would be updated, uploaded on BOS portal. So thanks for patient listening and making this session truly interactive. Thanks a lot of you guys. Thanks a lot of you. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Session over. Recording stopped. Sunil wants to ask. Sunil, what you want to ask? मैम मैंने ना नवंबर के लिए अप्लाई किया था
मेरा एग्जाम कब होगा ये पूछना था। नवंबर के लिए एग्जाम अब सितंबर में हो रहा है ना ऑडिट का इंटरमीडिएट, मई के बाद में। आप एक काम करना, आप कल ऑफिस टाइम में ऑफिस पे कॉल करना, क्योंकि ये ऑडिट सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है ना, तो आप कल ऑफिस टाइम पे ओके एक बार मैम। कॉल कर लेना, तो वहां पे क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।